are discussing about the minimum support price that is provided to the farmers. किसानों के लिए न्यूनतम खुदरा मूल्य सरकार निर्धारित करती है मित्रों, and that prices is provided to the farmers in order to provide minimum support to the produced that they are in the form of wheat, rice, food grains, pulses, any edible oil or any kind of product, so that farmers can have their justified price value for any kind of product. तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए जस्टिफाइड प्राइस वैल्यू होती है, that is again a part of MSP. Now MSP is a rate at which government provides the incentive to the farmers, which are again taking a part of that value and taking the minimum price to the crops. यानी कि there are 23 crops selected by CCEA, भारत सरकार के कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा 23 फसलों की प्राइस निर्धारित की गई है, एंड दैट प्राइसेस इज प्रोवाइडेड एट द सीजन ऑफ एट एंड ऑफ द हार्वेस्ट व्हेन द प्रोडक्ट गोज इनटू द मार्केट टू बी सोल्ड. जब वो प्रोडक्ट मार्केट में जाता है बेचने के लिए, तब उसकी प्राइस निर्धारित जो की गई है सरकार के द्वारा, उस लागत मूल्य पे उस चीज़ को किसानों के द्वारा सरकार को बेचा जाता है इन टर्म्स ऑफ APMCs, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ एंड FCIs. तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ एंड FCIs उस प्राइस पे उत्पाद को खरीदते हैं. नाउ MSP इज द रेट एट विच गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एंड बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ लीस्ट 1.5 times of the cost of production incurred by the farmers. The Union Budget 2018-19 announced that MSP would be kept at levels of 1.5 of the cost of production. जो भी प्रोडक्शन में लागत आई है, इंक्लूडिंग द फर्टिलाइजर्स, मशीनरीज एज वेल एज द लेबर कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट को इंक्लूड करके मशीनरी प्लस फर्टिलाइजर्स प्लस लेबर्स प्लस सीड्स प्लस वाटर, इन सब को ऐड करके 1.5 लेवल पे उसको MSP प्रोवाइड किया जाता है, एंड इट इज़ डन बाय द रिकमेंडेशन ऑफ CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, and CACP provide the costing at A2 plus FL label and C2 cost. So what is A2 plus FL? A2 is cost over all the paid out expenses and that is both in cash and kind. So ये करेंसी में भी and plus kind value में भी दी जाती है. It is incurred by farmers on the seeds, बीजों पे, fertilizers पे, chemicals पे and hard labors, fuels, irrigation, सिंचाई और जो भी fuel लगे हैं, डीजल, पेट्रोल, whatever are being used, that is again a part of this A2 cost. And FL covers the actual paid out cost plus imputed value of unpaid family labor. Then there is C2 cost, which accounts for the rentals, interest of foregone over land and fixed capital assets. तो C2 कौन सा कॉस्ट होता है? That cost which is taken by the labor value in the market as well as the family person and fixed capital assets on the top of A2 plus FL. So the cost goes for A2 plus FL plus C2. Remember this formula for determining the MSP. Now next part goes for MABI Digital 3.0. So what is MABI Digital? Ministry of Housing and Urban Affairs collaboration with Ministry of Electronics, that is MEIT, and Ministry of Housing is creating a technology launched as MABI Digital 3.0 campaign. So what is this? Digital onboarding and training of street vendors. जो स्ट्रीट्स पे रेडी पटरी वाले और वैसे लोग जो स्ट्रीट्स पे घूम घूम के कालीन बेचते हैं, कुकर बनाते हैं या सम थिंग्स दे सेल ऑन रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स, तो ऐसे लोगों के लिए ये PM स्वनिधि स्कीम लाई गई है. स्वनिधि, दैट इज having self money in their banking account. So it covers the transaction across 223 cities and having the features
of Bharat Pay, MS Swipe, Phone Pay, Paytm, Xware and other UPI IDs with QR codes and providing digital training to the street vendors. तो स्ट्रीट वेंडर्स जो भी काम करते हैं उनके द्वारा किसी भी बैंक अकाउंट में उस मनी का सर्कुलेशन होना चाहिए एंड दे कैन ट्रांजेक्ट बैक थ्रू एनी ऑफ दीज अकाउंट्स। नाउ पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना अगेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो एक ऐसी स्कीम है, इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट इज totally governed by the central government budget and funding. What is the purpose? It facilitates the affordable working capital loans up to rupees 10,000, 10,000 तक का लोन लेती है at interest of 7% on regular payment of street vendors. It is implemented by which agency? SIDBI. याद रखिए दोस्तों, ये SIDBI के द्वारा implement की जाती है। And the key features is gradual guarantee cover to lending institutions on portfolio basis. Now, what is the purpose of transport and marketing assistance? Now, there is next news which covers the transport as well as the marketing assistance. What is the transport? The process of delivering a product from a manufacturer to the consumer level is a process of transport, and the marketing is done by advertisement, distribution and selling of that product. So it covers under Ministry of Commerce and Industry since 2019 and specific agriculture products. So जो कृषि प्रधान इकोनॉमी हमने देखा कोविड-19 के भी पीरियड में, India has been supported by various kind of products that are developed through the एग्रीकल्चरल बॉडीज। तो एग्रो प्रोडक्ट्स जो भी आ रहे हैं that are again taken into TMA scheme, and that is marketing of agricultural produce. The assistance help to mitigate the disadvantage of higher freight cost faced by the Indian exporters in the agriculture produce. तो जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहे थे उसमें हायर कॉस्ट निकल रहे थे, एंड दैट वाज अगेन अ प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द एक्सपोर्ट कॉस्ट एंड टू मेक द एक्सपोर्ट चीपर फॉर द फॉरेन nationals which are having Indian products, and that is a coverage of all the exporters duly registered with relevant export promotion council as a part of foreign trade policy. इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डेवलप होते हुए जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे थे दैट आर अगेन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। नाउ what it covers the freight, and what is the freight? That railways that carry the wagon with the transportation of all the agricultural produce, that is a freight. And marketing assistance for the export, both normal and referred the cargo. So air cargo, seaport cargo travel, including railway travel, and all the expenses of the traveling and marketing are incurred into this phenomena. Now, what is the duration of a scheme? It goes from 1st of March 2019 to 31st March 2020, यानी कि एक साल के लिए इस स्कीम को रखा गया था फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year, and then revised transport and marketing assistance is provided in TMA for agricultural produce, and which is held for the exports affected on after 1st of April 2021 up to 31st March 2022, यानी कि इस साल के मार्च एंड तक जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं एग्रीकल्चर बॉडीज के द्वारा, उनमें जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए जा रहे हैं उनकी प्राइजेस को सपोर्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, सो दैट these products of agriculture market can reach to the international value. And it covers more of it. There are dairy products, तो वैसे products जहाँ पे डेयरी उत्पाद होते हैं in terms of milk, cheese, and paneer and such kind of products which are dairy based. So there is a rate of assistance
that is provided, and which is again a value of 50% for the export by taking to the market and 100% export in the air value. Now next goes for the ULAN scheme, that is उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक scheme. It was again a phase 1, then we see phase 2 and phase 3 is now. So what was in phase 1? We saw the vision of Prime Minister of India that even a chappal wearing person can travel to the global airways and can be able to the access airports and air connectivity to reach its locality. उड़ान phase first में हमने क्या देखा कि areas that are far distinctly located such as northeastern areas, tribal areas, Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, and such areas which are having distant location should be provided with airport connectivity to provide the cargo, travel and facilitation at a massive level. Then in ULAN phase 2 we saw that more of air transportation as well as the business class was prevailed. Then in ULAN phase 3 we are having a rationalization of the VAT and GST over ATF fuel. So aviation turbine fuel that is having much of cost, so it is cost effective और उसको reduce करने के लिए GST plus VAT जो उस पे लग रहे थे उसको गवर्नमेंट reduce कर रही है. So let us look into it. It is enhancing connectivity to remote and regional areas of country, making air travel affordable. Key components: National Civil Aviation Policy led by Prime Minister Narendra Modi and launched in June 2016. Under this scheme, half of the seats in UDAN flights are offered to the subsidized fare. किसी भी वायुयान में जो ट्रैवल कर रहे हैं in any airways, then there is half of the seats are at a subsidized level, whichever the number of passengers being traveling to the airport and having air cargo, they are subsidized at a half level. Then there is a viability gap funding, and which is amount shared between the center and the concerned states. So VGB क्या है, सेंटर और स्टेट लेवल पे जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको फंडिंग करना, that is again a part of this scheme, and it will be jointly funded by central government plus state government. So it is a shared based model and it will run for the next 10 years, 10 years period extended thereafter. Remember this fact. Now T+1 in news, again a crucial point that can be asked at a tricky level for UPSC exam. What is T+1 level? So T+1 level is a scheme at security market and the capital market, share markets, in which it places the transaction date, which is a day of transaction taking place. So T+1 day यानी कि कोई भी सिक्योरिटी जो शेयर मार्केट में ली जा रही है उसको टाइम +1 एंड टाइम +2 लेवल पे इंक्रीज किया जाना एट द वैल्यू ऑफ शेयर ट्रांजैक्शन. शेयर मार्केट में जो भी वैल्यूज ट्रांजेक्ट हो रही हैं इन एनी फॉर्म दैट आर टेकन इन द सेटलमेंट ऑफ वन डे and after actual taking place the trade accounted for Monday get settled on Tuesday. यानी कि जो भी शेयर्स थे वो मंडे को सेटल हो रहे थे एंड नाउ एडिंग वन डे इट इज ऑल्सो सेटल्ड ऑन ट्यूसडे. नाउ एट T+2 it can be settled on Wednesday also. Okay, and now it also goes to Thursday, but the credit amount of the investor will be goes into the account by Friday itself after the money transaction for the 3 days. यानी कि फ्राइडे लास्ट तक जो भी ट्रेडिंग हुई है शेयर मार्केट में that will goes into the account of the shareholder that is doing the transaction process. Now what is the benefit of T+1 settlement? It shortens the cycle, not only reducing settlement but also reduces and frees up the capital requirement as a collateralized risk. Remember this fact. वैसे रिस्क दैट आर अ पार्ट ऑफ कोलेटरल संपार्श्विक के तौर पे जो
शेयर्स के रूप में कोई भी परचेज होल्डर रखता है उसके बदले में, दैट इज अ पार्ट ऑफ कोलैटरल एंड दैट इज टेकन इनटू द risk of this part in T+1. It also provides the liquidity for the investors that they get funds. Further, it reduces the number of outstanding unsettled trades at any instant and thus decreases the unsettled exposure to clearing corporate by 50%. Lastly, it is a shorthand settlement cycle. So what is it? It is a shorthand settlement cycle. So settlement is being done within a week, that is T plus 3 days. That is why it makes the news. कम अवधि में जो भी शेयर्स वगैरह परचेज और सेलिंग हुई हैं उन शेयर्स को सेटल करके फ्राइडे तक डिपॉजिट हो जाना इन द अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर, दैट इज अ पार्ट ऑफ T+3 सेटलमेंट. नाउ व्हाट आर द इश्यूज दैट इट फेसेस? So it is having issues of different time zones that are a part of it. अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज चेंज हो जाती हैं. सच एज इन इंडिया देर आर 2 टाइम जोन्स. इन गुवाहाटी इन आसाम वी आर हैविंग डिफरेंट टाइम जोन. एज वी रीच टू द वेस्ट, गुजरात, कच्छ, देर इज डिफरेंट टाइम जोन. So the period of time again shift from Friday and moreover that it can be shifted to the Saturday. That is a problem for the shareholders. Now next point, NFRA, that is National Financial Reporting Authority, which makes the news. NFRA क्या है मित्रों? So NFRA is a National Financial Reporting Authority and that authority which aims for the development of financial bodies and help for the regulation of various financial and non-banking financial companies are all part of NBFCs under section 12132 of Act. It is formed under the Companies Act of 2013 and it has a composition of NFRA with having a chairperson appointed by central government and a maximum number of 15 members to be appointed by the government. What are its function? It recommends accounting and auditing policies. ये क्या करती है? जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई हैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के लिए, उन पॉलिसीज़ को निर्धारित करना एंड मेक्स द पीपल टू गेट अवेयर अबाउट दैट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस बॉडी एंड इट हेल्प्स फॉर द मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ कॉम्प्लायंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स and auditing standards, overseeing quality of services such as ensuring measures for improving the services, and platform provides the necessary incidents for the aforesaid functions and duties. So what are the powers of NFRA? इसके पास कुछ पावर भी दिए गए हैं. So it proves the listed companies, जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के द्वारा जो भी लिस्ट की गई कंपनियां हैं, इंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उन सारे की जांच करने की ताकत NFRA अथॉरिटी को भारत सरकार के द्वारा दी गई है. एंड इट हैज़ यूटिलाइज्ड पब्लिक कंपनीज आल्सो नॉट लेस दैन 500 करोड़ और एनुअल टर्नओवर ऑफ नॉट लेस दैन 1000 करोड़. It can investigate professional misconduct of the community and company. यानी कि कोई भी कंपनी के द्वारा प्रोफेशनल तौर पे कोई भी मिसकंडक्ट होता है, that is again a part of probe by NFRA. Then there are chartered accountants of India who are prescribed class of body corporate to look into such matters of misgovernance. Remember this fact for your prelims. Next news goes for IIP, that is Index of Industrial Production, and which grew by 11.5%. So IIP, that is Index of Industrial Production, which rates all the core sectors as well as other sectors of economy, that raised by 11.5%. 11.5% के रेट से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ शो कर रहा है. इन पोस्ट कोविड सिनेरियो अगेन वी सॉ दैट राइज इन इकोनॉमी 10.5% बाय NSO डेटा
सो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा एक डेटा लिया गया जिसमें दिखाया गया है कि हाउ द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इज अगेन राइजिंग अंडर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, द कोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर कीप राइजिंग. सो NSO is under Ministry of Statistics and Program Implementation, and it indicates the composite indicator that measures the growth of industries, groups and sectors such as mining, manufacturing, electronics, electricity, basic goods, capital goods and intermediate goods. इन सारे सेक्टर्स की देख रेख और रैंकिंग करता है IIP. So in a base year of 2011 and 12, IIP is making a process that is leading to the total monitoring of system, and it provides the government agencies including Ministry of Finance under Reserve Bank of India. तो RBI के द्वारा ये गवर्न किया जा रहा है, and again the policy making is done by central government. Further, IIP remains a calculation for the quarterly and yearly basis of GDP. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? आई हैव टॉट इन द इकोनॉमिक सर्वे क्लासेस दैट GDP इज कैलकुलेटेड बाय कंजम्पशन, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट. Okay, so this is formula for the GDP calculation, and which is again a part of IIP that makes the news. Now, what are the core sectors that is calculated a rise of 40.27%, that is electricity, steel, coal, crude oil, natural gas, cement, fertilizers and refinery products.